Good evening and welcome to Blueprint Explosive Exclusive. Today we're going to break for you a massive story. It's an exclusive Times Now investigation where our undercover team has accessed the inner workings of the Ram Janmabhoomi Trust. Times Now special investigating team went to undercover inside Ayodhya's most guarded gates. The Sri Ram Janmabhoomi Trust guest house where General Secretary Champat Rai has allegedly been operating in the shadows even as controversy engulfs him. Our cameras captured what the trust never wanted the country to see. Aides offering to bypass CCTV. Assurances that everything can be facilitated. And a donation process where gold changes hands with no clear documentation, no clear paper trail, and no accountability. Our reporters, posing as donors from Kanpur, asked to meet Babuji, a reference to Champat Rai. The moment they mentioned silver, the tone on the other end changed. The caller said that arrangements would be made and that a meeting with Babuji would be difficult as he wants to currently avoid public appearances. But within minutes, the gate swung open for our undercover team. Take a look at this. हम लोग जो है कानपुर से आए हैं, बस दर्शन करने आए थे तो भाई साहब से मिलना था। चंपत साहब से। अच्छा वो अनिल मिश्रा जी से किसी से हो जाएगी? भैया वो लोग यहाँ है नहीं। अच्छा जैसे चंपत जी से हो जाए, जैसे कुछ मंदिर को हमें दान वान देना था। तो भैया दान देना है तो डोनेशन काउंटर पे जाइए ना आप। नहीं एक बार भाई साहब से मिलवा देते तो अच्छा था। नहीं आपको डोनेशन करना है या भाई साहब से मिलकर ही देना है। क्या है कुछ बताइए। बर्तन है भगवान का, और भी कई चीजें हैं जैसे चांदी सिक्का इसका है। मेरी बात ये है यहाँ पे उनसे मिलवा देंगे, वो आपके सामने सब कुछ कर देंगे जी। और अगर आप ये कह रहे हो कि बाबूजी मिलके करना है तो थोड़ा मुश्किल है। आप देखिए इस समय माहौल आपको पता है। हाँ ठीक है। हम लोग यहाँ आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे? अच्छा 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ, आपको नंबर वगैरह सब दे देता हूँ, आप मिल लीजिएगा, सब हो जाएगा। एक ऑफिस डायरेक्ट चले जाइए आप। मैं आता हूँ ना। Inside, a man identifying himself as Pradyum, described as a close aide of Champat Rai, assured our reporters that everything will be facilitated. He's also claimed that Champat Rai was inside the guest house at that very moment, holding meetings despite staying out of public view. Now, this sting clearly proves that Champat Rai is much in charge, very much in charge as the man responsible for the place and is overseeing all donations at the Mandir Trust. आप जो जैसा उचित समझे। हमने आपको बता दिया, अब आप जैसा समझिए। आप कहेंगे हम यहाँ करवा देंगे, हमारा सीए आ जाएगा, वेट मशीन लेके आ जाएगा, सब कुछ आपके सामने करके आपको रसीद दे देगा हाथों हाथ। चाहेंगे आप अकाउंट ऑफिस चल रही है, अकाउंट ऑफिस में भी यही काम होगा, यहाँ भी वही काम होगा। बस ये उनको यहाँ फिराना यहाँ पे बस आने की थोड़ी तकलीफ होगी, रास्ता थोड़ा। तबीयत कैसी है? क्या पूछ रहे थे? तबीयत सब मिलेंगे पहले। तबीयत ठीक है, कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है। केवल थोड़ा सा उसकी पीछे पे बार बातचीतें हो रही है, जिससे थोड़ा सा मिलने के लिए उन्होंने खुद मना कर रखा है। बाकी सामान होता तो अभी तुरंत मिलवा देते हैं, झूठ भी नहीं बोलेंगे है यही है, लेकिन उन्होंने खुद मना कर रखा है। बैठे हैं कुछ बातचीत। और वैसे भी देखिए मीडिया झूठ बोल रही है, इस्तीफा दे दिया, सब कुछ झूठ बोल रही है। मैं इतने सालों से चीजों को देख रहा हूँ। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी भैया। इसमें क्या हो रहा है, मीडिया को भरपूर पैसा मिला है और मंदिर के बहाने सरकार को बदनाम करने के लिए। मंदिर से केवल उनको जरिया मिला है। सरकार को नहीं ना बदनाम हो रही है तो पूरी हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है भाई। तो मंदिर का ही वो आके बोलेंगे भाई तुम तो चोर थे, तुम तो चोर थे। सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं वो लोग। सिर्फ राजनीति और वोट बैंक, कुछ नहीं है। बाबूजी थोड़ा बहुत गलती हुई। बाबूजी स्वस्थ है ना? बाबूजी स्वस्थ है। और ये साहब के पिताजी मिल चुके हैं बाबूजी। देखिए जब शुरू में पहले दिन सुने थे तो थोड़ा सा झटका तो लगता है, कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति हो। और अपने सिद्धांत वाले थे भाई। So despite offering his resignation, sources say that Champat Rai is back in action, operating alongside Anil Mishra. In fact, in this sting, our team walked in with fake gold jewelry and crucially, no original bill. However, they said that even a duplicate bill will do. Not once did Champat Rai's aides insinuate that the absence of the original bill would be a problem at all. Instead, they told our undercover reporter that the gold could simply be shown as a donation. No bill is needed and demanded a written assurance stripping the donor of any right to question the fate of the donation.
रसीद है ना मोबाइल में? मोबाइल में रसीद नहीं आ रही। देख लीजिए एक बार, फोन में ही मंगा लीजिए। कच्चा मंगा लेंगे, कच्चा ही मंगा लीजिए। कच्चा ही मंगा लेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए काउंटर पे को सुनार बैठा नहीं है कि फर्क लेगा क्या। एक फील रहता है तो थोड़ा क्या ठीक है, अच्छा रहता है। कंज्यूम रेट चल रहा है, चूज कर रहिएगा। ये आपके सामने जाएगा, शानदाला को पहनाएंगे, वहीं पर गेट वगैरह हो जाएगा, वो वहीं जमा हो जाएगा। फिर आपको रसीद वहीं से बाद में मिलेगी, आपके मोबाइल पे जाएगी, आपका डिटेल सारा रजिस्टर से रख लेंगे। नाम, रसीद रखिए, नंबर, एड्रेस, जो भी चाहिए होगा वो सब लिख लेंगे वहाँ पे। रसीद शाम तक या कल आपको मिल जाएगी आपके मोबाइल पे। All right, let's take this across to my colleague Priyank Tripathi, who's joining us live from Ayodhya. Priyank, you went to Champat Rai's office. Babuji is there. He's very much part of the process. Of course, you recorded this before Champat Rai's statement today, saying that his work at the trust is over, that he will not take any kalank with him. But the point is, until yesterday, he was very much functioning as part of the trust. And what is more, the manner in which the donation process is happening, no lessons seem to have been learned. Yes, S.I.T. Madhav, and the kind of glitter which was there in the eyes of these individuals just by watching at these fake jewelries. This is the set which we had taken, and the moment we showed it to them, they were so much under the influence, Madhav, that every norms could have been flouted by them. They were claiming that okay, you come to some different location, we will allow that. Even if you have the kacha bill, which is a not a proper bill without GST, that will also be accepted. But when I asked them that what will be the status of the receipt, I was being told that after 2 days you will get the receipt. And what is very important, Madhav, that I was told to give this particular letter, although we have neither submitted this fake ornament in the trust of Lord Sri Ram, and neither we have given this particular thing, because we managed to skip from this location, because these are certainly individuals who are having their henchmen along with them. But this letter was told by them to for me to sign, which says, Madhav, that I am giving everything to the trust and to the trust management, and whatever may be done by them in the future will be acceptable to me, and I will have no right. So all those donors, those devotees of Lord Sri Ram who have come here, have devoted something where the Chanda Chori is happening, have no question to ask from any other individual. That's why the trust had himself to go and order for the request for an S.I.T. Okay, So the owner's certainly lies on. Very, very shocking that no lessons have been learnt. The Chanda Chori apparently is still jari. That's the sad state of affairs in Ayodhya. So many days of an S.I.T. probe, but look at the manner in which things are still happening on ground. Over the last 24 hours, Priyank has got us all those sequences that you just saw on the screens. Let's quickly get in the reactions now coming into the story. This is the General Secretary of the Faizabad Bar Association, who's part of the delegation that filed the original complaint against Champat Rai, Gopal Rao and Anil Mishra. Listen into what he says. जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग ने अपनी जांच करवाई थी, ये पता चला है कि आज भी वो चंपत राय वगैरह उनके लोग भी आज भी चंदा वगैरह सब ले रहे हैं, उसी तरह से जिस तरह से पहले कर रहे थे आज भी वो कर रहे हैं। तो ये तो एक जो आरोपी है वो आज भी वहां पर खड़ा होकर इस तरह से काम करे तो गलत बात है। उनको तो बताया कि हमने त्याग पत्र दे दिया, ये दिया, त्याग पत्र वगैरह आपने दे दिया तो अंदर किस लिए बैठे हैं आप? हटिए, किस चीज की आपको लालच, किस चीज का मोह? तो ये है वहां पे सब एविडेंस मिटाया जा रहा है, सब कुछ कराया रहा है। तो ऐसे लोगों को तुरंत वहां से हट जाना चाहिए, उसमें कोई काम उनको नहीं करना चाहिए। ये एक नैतिक जिम्मेदारी व्यक्ति की होती है, वहां से जब आरोप लग गया तो हट जाना चाहिए। All right, in fact, we have got a reaction coming in from the Samajwadi Party as well, who said that this is proof that Champat Rai is still willing to meet donors and accept gold and silver without issuing any receipt. Listen into this reaction. राम के नाम पर लूट है, जितना मर्जी लो लूट। कि अभी भी बाबूजी मिलने को तैयार हैं, अभी बाबूजी सोना चांदी की बिना रसीद दिए सोना चांदी लेने को तैयार है। इसका मतलब पूरी तरीके से नंगाई पे उतारू हो चुकी विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, आरएसएस। चंपत राय ने अगर इस्तीफा दे दिया तो फिर उनका ट्रस्ट में क्या काम? एक बात, एफआईआर अभी तक उनके नाम हुई नहीं है, और जिस तरीके से उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए कानूनी रूप से, वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं धन्यवाद दूंगा टाइम्स नाउ को कि उन्होंने ऐसा स्टिंग किया।
All right, here's a response coming in from the UP government. It's urging patience. Here's Minister Anil Rajbhar, who says the S.I.T constituted the day the matter that came to light, and even Supreme Court has said there's no need to hurry. He says a trust meeting is scheduled to decide on Champat Rai's resignation soon. Listen into this reaction. देखिए, अभी तो आज के अखबारों में भी है कि कोई बैठक होनी जा रही है ट्रस्ट की, उसमें निर्णय होना है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसको स्वीकार करना है कि नहीं करना है। तो जब तक इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं हो जाता है, जहां तक मेरी समझ काम कर रही है, तब तक वो ट्रस्ट में है। और मैं तो कहता हूं, देखिए, सरकार ने स्पष्ट किया है, चूंकि सरकार भी समझ रही है, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि लोगों के आस्था से और श्रद्धा से जुड़ा हुआ ये सवाल है। हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही भी है, कार्रवाई होने दें, एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आने दें। Now, in a big statement on Times Now's S.I.T expose, Ram Mandir trustee Dinendra Das has invoked scriptures to take aim at those who have been named in this thing. He has said that in Kali Yuga, even great men lose their sense and warns that Ram Lala is watching everything. Listen in. रामलला सब देख रहे हैं, वो अपने आप दंड देंगे, अपने आप सब ठीक भी हो जाएगा और सब पैसा आ भी जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। एक कलयुग लक्ष्मी में बड़े बड़े आदमी दिमाग खराब हो जाता है ना, सीधे सीधे आदमी का खराब हो जाता है। गरीबी जो रहती दिमाग ठीक रहता, लक्ष्मी आने बड़े बड़े का दिमाग बिगड़ जाता है। रामलला सब देख रहे हैं, सब निर्णय दे देंगे। नहीं, जो मेहनत का पैसा आता है वो तो बड़े बड़े ठीक हो जाते हैं, जो फ्रॉड वाला पे उसमें दिक्कत होती है। इसमें हमें सब पैसा दिए है ना, उससे अपने आप सबका दिमाग खराब हो गया, अपने आप सब ठीक भी हो जाएंगे और सब जेल में पहुंच जाएंगे। Let me get a quick response from Mohit. Mohit, you've been covering this for the last few days. You've seen the reactions coming in, but clearly, this shows that the manner in which things were going wrong and shows why things were going wrong so horribly, because the attitude has not changed. Well, yes, in fact, Madhav, and the excuse that is being given by the trust or by the people over here is that Champat Rai's resignation has not been accepted, and perhaps that is why he's inside. But Madhav, he is the focal point of the investigation. Many of the accused, including Tinnu Yadav and Lavkush Mishra, are said to be close associates of Champat Rai, and that is where the Bar Association also filed a complaint today, saying that an FIR should be registered against Champat Rai, and they are also saying that if he is sitting in the trust, then he will surely influence the investigation, and that is where the questions are rising, that is it a fair probe that is happening and only the small fishes have been caught? What about the people who are sitting at the helms of the trust? Why exactly no action is being taken, and why exactly Champat Rai, Anil Mishra, Gopal Rao are still part of the trust? They have resigned, they could be asked not to come to the office, but still they are there, and that is where the questions are being raised, that why exactly are they still inside the office? And very important question, Mohit. In fact, I'd like to thank you as well as Priyank, who's got us that exclusive ground report, the sting operation that he has conducted. Let's quickly open this up to our guests now. With us is Anla Singh, spokesperson of BJP. Vinod Bansal is national spokesperson of VHP. With us also is Shailendra Jaiswal, General Secretary of the Faizabad Bar Association. We have Vivek Sailas, national spokesperson of Samajwadi Party. Somnath Bharti is with us, former Delhi minister and AAP leader. Let me start first and foremost with Vinod Bansal. Vinod Bansal, Chanda Chori has happened. Police investigation, S.I.T, all that has gone on. And yet, this is the attitude of the people sitting in the trust. What explains this? मतलब मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, मुझे पता नहीं एक्चुअली आपने क्या दिखाया, तो कैन यू एक्सप्लेन भी? मैं आपको साफ-साफ रुपए बता देता हूं सर। जब ज्वेलरी दी जाती है तो कहते हैं कि कच्चा बिल भी चलेगा, रसीद 2 दिन बाद दी जाएगी। गेट खुल जाता है जब पता चलता है कि देयर इज ज्वेलरी बीइंग डोनेटेड, and in fact people are telling us that Babuji or Bhai Sahab, whatever they refer to, Mr. Champat Rai, he is very much there in the office until the previous day. तो कैसा रेजिग्नेशन, कैसा इस्तीफा फिर इनका? नहीं, देखिए 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब कोई डोनेशन देता है तो डोनेशन के साथ में कोई उसका बिल सबमिट करना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कभी आज तक कभी डोनेशन दिया हो और उसके साथ कोई बिल सबमिट किया हो। न तो बिल मांगा जाता है, न ही बिल कोई देता है। अब मुझे समझ में नहीं आता आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या, बेसिकली आई कैन नॉट अंडरस्टैंड what exactly it is कि भी क्या डोनिंग है, कोई अपना रसीद? No, they want to know कि ये बिल का, ये गोल्ड का सोर्स क्या है, उसकी बिल की जानकारी जो दी जाती है वो they are ready to accept a duplicate bill without the actual details of where the gold has been purchased from. Number 1. Number 2, receipt not being given immediately. Receipt will be given after 2 days.
Why is that the case, Mr. Vinod Bansal? Why is the lessons not been learned? ये जो सारे चंदा चोरी का बेसिस है, वही चीजें अभी भी चलती आ रही है, आखिर हो क्या रहा है? नहीं माधव जी, देखो मैं अभी आपकी बात से जो समझा हूँ वो देखिए, मैं आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द इशू एग्जैक्टली, बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट एवर यू सो सैड। मैं समझ रहा हूँ कि देखिए कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन तो है नहीं, यहाँ एक क्रेता ने विक्रेता को बेचा और जो क्रेता है वो उससे बिल मांग रहा है, ओरिजिनल मांग रहा है, डुप्लीकेट मांग रहा है। यहाँ तो डोनेशन का मामला है। डोनेशन के केस में क्या होता है कि इन जनरल जो है, जो किसी भी टेम्पल में आप जाइए, राम मंदिर को छोड़ दीजिए, अगर किसी भी टेम्पल में जाएंगे, आप ज्वेलरी डोनेट करते हैं, कैश जो डोनेट करते हैं, कुछ भी डोनेट करते हैं, तो डोनेट करते समय कोई भगवान कोई रसीद तो मांगते नहीं ना, उनका कोई जो विनोद जी कैसी बात आप कर रहे हैं? यही तो प्रॉब्लम है, लोग बिना रिसीट के डोनेशंस कर रहे हैं। जो जिन लोगों ने पिछले 2 साल में डोनेशंस दिए, सब बाहर आके कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमने सिल्वर के ब्रिक्स दिए, कोई कह रहा है हमने जेवरात दिए। अगर रिसीट नहीं होगी तो उसका क्लियर डॉक्यूमेंटेशन कैसे रहेगा? और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आज की डेट में लोग बाहर आ रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए। दे आर सेइंग देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन। And let me bring in, in fact, to explain the matter, let me bring in Mr. Jaiswal, who is with the Bar Association. शैलेंद्र जायसवाल जी, रिसीट की कहां जरूरत आती है? क्योंकि विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि एक श्रद्धालु अगर जाके किसी भी मंदिर में डोनेशन देते हैं जेवरात की, तो उसमें रिसीट का कहां रोल आता है? आप उनको बताना चाहेंगे व्हाई दैट इज सो रेलेवेंट इन दिस केस? देखिए हमारे राम मंदिर में यहाँ पर जो रसीदें दी जाती थी, बताया जाता कि यहाँ पर ये काउंटर, उस काउंटर पर आप जाइए, उस काउंटर पर जाएंगे तो आपकी रसीद दी जाएगी। तो जो श्रद्धालु हमारे जाते तो वो रसीद देते थे, कुछ लोगों के रसीद नहीं दिए, इसीलिए इस तरह से बातें उत्पन्न हो गई हैं। ये बातें इसीलिए सब उठ रही हैं कि इन्होंने रसीदें कुछ लोगों को दी और कुछ लोगों को नहीं दी। जो रसीद नहीं दिया गया उस सामान सारे गायब हैं। जवाब दीजिए विनोद जी। हाँ, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी कोई रूम में, इसलिए प्रॉब्लम, मैं थोड़ा बीच में इंटरव्यू किया। मैं कह रहा हूँ देखिए 2 चीजें जो मैं समझा हूँ कि देखिए, जो अगर आप डोनेट करते हैं, मैं कोई भी चीज डोनेट करने जाता हूँ तो डोनेशन की रसीद मांगता हूँ नेचुरली, और डोनेशन की रसीद मिलती भी है। लेकिन अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी अगर कोई डोनेशन देता है तो डेफिनेटली उसमें, अगर मान लो मैं, आपने मेरे को डोनेशन दिया, मैं अगर रिसीट काउंटर पर बैठा हूँ तो मैं, आपने कुछ गोल्ड दिया, तो अनलेस अनटिल इट इज वेरीफाइड कि इट इज रियली गोल्ड, तो मैं गोल्ड तो नहीं लिख सकता। कल को आपने दिया कुछ और, मैंने लिख कुछ और दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अगर आपने कैश दिया और कैश की रसीद नहीं दी तो डेफिनेटली इट इज ए क्राइम, और ये गलत है। आपने कैश दिया क्या उसमें, या गोल्ड दिया था, मतलब कोई ज्वेलरी दी? विनोद जी, लेट मी वेरी क्लियरली एंड वेरी रिस्पेक्टफुली टेल यू सर, ना तो जो गोल्ड की रिसीट दी जा रही है और ना तो गोल्ड की सर्टिफिकेट है। कच्चे बिल के लिए तैयार है लोग, ट्रस्ट के लोग, and that is what we have captured on camera. चंपत राय जी अभी भी एक्टिव है। नहीं, आपकी your opinion is one thing, but what we have captured on camera is a totally different scenario. माधव जी कृपया इसको मिस इंटरप्रेट न करें। मैं जरा जानना चाहता हूं, आपके सुधी दर्शकों को जानना जरूरी है। देखिए, सिंपली अगर एलिगेशन लगाना तो बहुत आसान है सर। एलिगेशन नहीं है, दिस हैज बीन कॉट ऑन कैमरा। आप प्रोग्राम में लेट आए हैं सर, यू आर वेलकम टू वॉच व्हाट हैज हैपेंड। इफ वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, प्लीज वॉच द प्रोग्राम। वी हैव ऑलरेडी aired the tapes for everybody. It is there in the public domain. You can watch it. It will also be on social media. But allow me to bring in others also. Vivek, tell us, what does this show? We have seen for the last 2 weeks the kind of controversy that has taken place in Ayodhya. Unfortunately, again the same thing is happening on ground. Yes, Madhav, it's very, very unfortunate what is happening, and these people are big sinners, they are sinners. And the bigger sinners are the people who are trying to defend them. Let me tell you that. They are the bigger sinners who are trying to defend these people, My question is, even today, they are fearless. There is no fear, because they know some big power is behind them. They are fearless, absolutely, as you said on your show. There's no changes at all. Champat Rai, this Gopal Rao, this Anil Mishra, this Govind Dev Giri, they are all enjoying their life. Nothing is happening. And no system has changed. Nothing at all. Same thing is going. The process is ongoing. And it's just said, okay, we have submitted the resignation, and the jury will take, or the committee will take the decision on the 11th of July. I think it's a perfectly planned system. They are trying to, eliminate the proof. You know why this is concerning? Why this is concerning, Anla Singh, is simply this. First of all, this is not the first time this is coming out. Yesterday also you've heard the comments of a certain Mr. Gupta who said the same. That Champat Rai is sitting in the trust office and that his resignation has not yet been accepted, and therefore he continues in his position. Why this is important is that in such an important position of responsibility, how do we know
that the evidence is not being, in some way erased, that the witnesses are not being influenced, because there is an ongoing investigation where close associates of his are key accused who have even been arrested by the police. Anila Singh. My Ram to all. The Ram Mandir Trust has officially accepted and confirmed the resignation of Champat Rai ji and Anil Mishra. In any legal institution or any independent trust, a resignation does not mean that you abandon your duties overnight and flee the premises. It is not so, especially when an active S.I.T investigation is underway. The person has resigned, of course, but there is a handover process as well. Handover protocols. And he has to answer the S.I.T queries as well. He has to cooperate fully, which he is doing. If somebody says, like, he has given the resignation... Ma'am, he has to cooperate with the inquiry. Why is he sitting in the trust office still? Isn't that a clear, conflict of interest? Somebody who's accused of a crime or accused of shielding some of his close aides who are the accused of the crime, why is he still operating from the trust office? See, no, he is there to hand over the entire thing. In just few seconds or in a day's time, he simply cannot elope away. That is the reality, and everybody must understand this thing. Let me get a response to that. No, ma'am, that is the moot point of this entire debate, and therefore let me bring Somnath Bharti in. One is, of course, the manner in which donations are connected, but Somnath Bharti, do you agree with Anila Singh when she says he cannot just suddenly leave his office, he cannot suddenly abandon his office, he has his duties to fulfill? Is that something that is acceptable in the face of all that we have seen? Madhav, the problem is we are not trying to understand where does the buck stop? Who is responsible? Why these thieves are so confident? The people who are responsible for stealing and doing theft at none less than Lord Sri Ram. Can you imagine what sort of guts they have? And do they believe in the God at all? Had they believed that Ram Lala is there, they would not touch. So the most Nastic people are these. They have found out Lord Sri Ram as a route to Satta and to make money. The problem is the trust is directly appointed by Honorable Prime Minister Mr. Modi. Till date, there is not a single word from him. Whom does the buck stop it? He was there at the Silanyas, he was there at the at the Dhwajarohan. At every occasion he was there. Why he is not speaking up? See, everybody knew in 2021, the land deal took place. 2 crore worth land was sold for 18.5 crore. 3 crore worth land was sold for 24 crore. 9 crore worth land was sold for 55 crores. Okay. So, quick response from Anila Singh. Almost out of time. Anila Singh, quick response, please. Land scam has taken place earlier, and now this particular donation scam that is taking place. Why does this continue? Is the question from Aam Aadmi Party. Quick response, please. I tell it. When their top leaders are accused of massive multi-crore scams, they refuse to resign, they hide behind the court appeal, and they destroy evidence. Here, senior dignitaries resign on pure moral grounds the moment an inquiry begins. Stop lecturing us on morality. We know very well what Aam Aadmi Party is and what Samajwadi Party is. Okay. Many questions that arise out of this, and there are very disturbing questions. One would have thought that post all of this investigation, the S.I.T probe, etc., their attitudes have changed. People have learned their lesson. On the ground level, things are pretty much the same. That's the unfortunate, very sad reality that we are reporting, and our reporters are getting from you on ground in Ayodhya. We're going to continue reporting on the story. More revelations are going to keep coming through the evening, ladies and gentlemen. Keep watching Times Now.